सुखमनी साहब का पाठ करती थी। और ऐसे ही टाइम निकलता गया। तो एक बार मेरे दादाजी मेरे पास आए और मेरठ में, और हम बाहर लॉन में बैठे हुए थे, और मुझे वो बोलते हैं कि बेटा मैंने तेरे भाई और कजिन्स के नाम सारी जमीन लगा दी है, और मैंने तेरे को तो कुछ नहीं दिया। सो आई स्माइल्ड एंड आई सेड, पापा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बोला तेरे को क्या चाहिए, तू मुझे बता तुझे क्या चाहिए। और मैंने उनको ये बोला कि आप बोलते हो ना कि सबसे बड़ा धन आदमी का गुरु होता है, तो आप प्रे करो कि मुझे गुरु मिल जाए। And he had tears in his eyes and he closed his eyes and a smile on his lips and he prayed for me. It was his prayer that I met Guruji. उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के पास चंडीगढ़ आ गई। मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ में थे, और जैसे ही मैं आई तो मेरे मदर मुझे बोलते हैं कि बेटा यहाँ पे ना एक गुरु महाराज आए हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, और मुझे गिल आंटी उनके पास लेके गए थे, जस्टिस गिल्स वाइफ। शी इज जस्ट पास्ड अवे अबाउट अ मंथ बैक। शी वाज रिलेटेड टू अस, तो वो मम्मी को लेके गई थी। और गुरुजी उसी सेक्टर में थे चंडीगढ़ में जहाँ हम थे, just about 4 or 5 houses away from our house. So when evening came, we got dressed and we went. जैसे ही हम गेट पे पहुंचे, इतनी ज्यादा मुझे फ्रेग्रेंस आई संगत जी, मुझे इतनी फ्रेग्रेंस कभी नहीं आई उसके बाद। इट वाज सो ओवरवेलमिंग द फ्रेग्रेंस कि मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं इन लोगों ने क्या किया हुआ, यहाँ पे इतनी सारी अगरबत्तियां लगा दी। बिकॉज दैट्स व्हाट आई अज्यूम्ड कि अगरबत्ती होंगी अगर गुरु जी का कुछ, मतलब यहाँ पे गुरु महाराज है या कोई ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग है तो अगरबत्तियां लगे। और जैसे मैं अंदर जाती गई, इतनी फ्रेग्रेंस के इट वाज कंप्लीटली, मेरे को ऐसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी फ्रेग्रेंस कैसे हो सकती है। बट द मोमेंट आई वेंट इन, मेरे को मम्मी ने इंट्रोड्यूस किया गुरुजी के साथ, और मेरे को गुरुजी ने बोला कि तू मेरठ तो आई है। आई सेड हाँ जी। कहते अच्छा। ही स्पोक टू मी। सत्संग जी मुझे नहीं याद उन्होंने क्या बात करी मेरे साथ, उन्होंने मेरे साथ मेरे ख्याल है 5-1 मिनट बात करी होगी, और मैं वहां उनके पास बैठ गई। आई सैट देयर फॉर 2 hours, और वो 2 घंटे में रोती रही। मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी, but I was weeping. It was almost like I had come home. You know, I was something which had been missing. I had finally received. It was that kind of a feeling of, you know, of fulfillment. I don't know, but I was weeping, constantly weeping, and I was embarrassed. I was young at that time, so I was very embarrassed कि मैं रो रही हूँ, सारी दुनिया मुझे देख रही है और क्या सोच रही होगी कि इसको क्या दुख है जो ऐसे रोई जा रही है। हम बहुत ईगोइस्ट होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि असलियत क्या है, बट हमें अपने जो, you know, we need to make an impression everywhere. So that is how I was. So गुरुजी ने लंगर करवाया और हम वापस आ गए। I was waiting for the next day. मतलब जब गुरुजी को आप मिल लेते थे ना, तो अंदर एक ऐसी इच्छा जाग जाती थी कि आपसे वेट नहीं होता था अगले इवनिंग का। आपको पूरा टाइम कॉन्स्टेंटली आपके मन में होता था मैं कब वहां पहुंचूं, कब वापस जाऊं। अगला दिन हुआ संगत जी, एंड वी वेंट अगेन। दिस टाइम आई वेंट, माथा टेका मैंने गुरुजी को, और मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठ गई। और उस दिन मेरा दिमाग बड़ा काम कर रहा था। मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी ने अच्छा सा एक नीले रंग का चोला पहना हुआ था, क्रेप का चोला था, प्रिंटेड क्रेप, आई स्टिल रिमेम्बर। एंड गुरुजी बैठे और बातें कर रहे थे। द elite of Chandigarh was there, and Guruji was talking to somebody, smiling, laughing. और मैं उनकी तरफ देख
कि और मेरे दिमाग में ये बात आई कि गुरु जो होते हैं वो तो सफेद कपड़े पहनते हैं या औखा कपड़े पहनते हैं और जनरली लोगों को बता रहे होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे जिंदगी जीनी है। ये तो आराम से बैठे हैं मस्ती से और लोगों से बातें कर रहे हैं। और मैंने जैसे ही ये सोचा तो मेरे को अपने आप पे बड़ी शर्म आई और मुझे सुखमनी साहब से वो दुख याद आई कि साध का निंदक महाहत्यारा, साध का निंदक परमेश्वर मारा। और मुझे अपने आप पे इतनी शर्म आई, मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने कहा गुरु महाराज मुझे माफ कर, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे बताओ आप कौन हो। एंड संगत जी मेरे सिर के अंदर मुझे इतनी जोर से आवाज आई। गुरुजी कहते हैं तू मेरे कपड़े देखना आई है, ये कपड़े तो मैं उन्होंने ਲਈ पाए है जिन्होंने मैं इथों वापस भेजना है, इन्हां कपड़ियां तो अगे आके देख मैं की है। संगत जी आई वाज सो शॉक, मैंने एकदम से आंखें खोली एंड गुरुजी मुझे देख के स्माइल कर रहे थे। दिस वाज माय सेकंड एक्सपीरियंस विद गुरुजी। बट हियर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई वाज सो नाइव कि मेरे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और मुझे फिर भी समझ नहीं आया कि गुरुजी क्या थे। कई बार तो मुझे लगता है कि गुरुजी आपके ऊपर पर्दा डाल देते थे कि आप उनको पहचान ही ना पाओ। हम पहचानते थे उस मोमेंट में और फिर हम भूल जाते थे। यू नो somehow गुरुजी never wanted any recognition, उनको नहीं चाहिए था, वो तो सिर्फ कल्याण करने आए थे दुनिया का। संगत जी ऐसे ही 2-4 दिन निकल गए, फिर मेरे हस्बैंड आ गए। मैंने बड़ी एक्साइटमेंट से अपने हस्बैंड को बताया कि look mommy took me to Guruji and this is how he is and this is what he is. And my husband got angry with my mother, not really angry, but he had, he spoke to her and he said, Mummy, she's so young. What are you doing? आप इनको इसको क्यों इधर लगा रहे हो? तो वैसे भी इसका दिमाग ऐसे ही चलता है और आप इसको लोग जो 60-70 पे जाके करते हैं आप इसको अभी लगा रहे हो। सो माय मदर सेड कि बेटा मैं कौन सा इसको कोई गलत काम सिखा रही हूँ। सो एनीवेज ही सेड कि यहाँ हिंदुस्तान में तो एक ईंट उठाओ तो नीचे से आपको एक गुरु मिल जाता है, साध मिल जाता है, एज इन पंजाबी दे से कि एक चुक्कियां एक पुट्ठियां तो साध मिल जाता है। So anyways, I told him, I said, you come with me, and he refused. So I used to go. Then one day we were supposed to go for a party in the evening. And I was very, I was so agitated कि क्यों जाना है मुझे पार्टी के लिए, नहीं जाना है, because मुझे ये था कि I'll miss meeting Guruji. So anyway, I was a little scared of my husband. I would say I was scared of not my husband, but I was scared of getting into any kind of altercation. I used to hate any kind of disharmony. So मैंने इनको डरते डरते बोला अपने हस्बैंड को कि मैंने कहा देखो यू सिट इन द कार, मैं 5 मिनट के लिए अंदर जाऊंगी, मैं गुरुजी को माथा टेक के आ जाऊंगी एंड देन वी कैन गो। सो समहाउ ही एग्रीड। और मैं जैसे ही गुरुजी के गेट पे मैं पहुंची, मैं जल्दी से अंदर गई। साथ संगत जी तब बहुत थोड़ी संगत हुआ करती थी, मतलब अगर आप गुरुजी के पास जाते थे तो कोई लाइन नहीं लगी होती थी। आप जाते थे, मे बी 1 आधा 2 आदमी आपके आगे होते थे, बट आप माथा टेक पाते थे और बैठ जाते थे। फिर ऐसे ही कोई आते रहते थे, 30-40 मैक्सिमम 50 लोग गुरुजी के पास बैठे होते थे। सो उस दिन जब मैं गई तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि मैं हैरान हो गई और मुझे ये डर लगना शुरू हो गया। मैं क्या नाउ ही इज गोइंग टू फ्लिप हिज फ्यूज एंड ही इज गोइंग टू गेट अपसेट कि तुम इतनी देर लगा के आई हो। तो मैं वहां लाइन में खड़ी और मैं सोची जाऊं कि जल्दी संगत आगे जाए, मैं गुरुजी को माथा टेकूं। और मैं खड़ी गुरुजी को प्रे करने लगी। मैं कहा गुरुजी प्लीज उसको भी बुला लो, मुझे डांटे ना और अंदर आ जाए। एंड थोड़ी देर बाद मैं मुड़ के देखती हूँ तो ही स्टैंडिंग बिहाइंड इन द लाइन एंड आई वाज सो अमेज्ड। मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैं बैठ गई।
my husband also did the same, or he also sat down. अब हम सुनते रहे गुरबानी जो चल रही थी, and थोड़ी देर के बाद I looked at him and I kind of signaled to him that should we go, and I got up. He also got up. We came out माथा टेक के, and जब हम बाहर आए तो he said, तू क्यों इतनी जल्दी उठ गई? We could have sat for a little while more. So that was another thing which came as a surprise to me. Coming from him, it was like an impossibility. Anyways, hum aa gaye. My husband went back to his place of service and I was in Meerut. In the meantime, Guruji came to Empire State. छोटे मंदिर में आ गए, और मैं जब भी मेरा दिल करता था मैं गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट चली जाती थी मेरठ से। गुरुजी मुझे जब मैं जाती थी एक दो अपने स्वरूप पकड़ा देते थे, मैं लाके वो स्वरूप और एक फाइल मैंने खोल ली, मैंने उसमें डालना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर मैं गुरुजी की फोटो लगाती हूँ तो गुरुजी ने, मेरे मदर इन लॉ ने, she will create a scene. So I just kept putting them in a file and I never kind of framed them or put them. और मैं जब जाऊँ गुरुजी मुझे दो और पकड़ा दे, and मुझे समझ ही ना आए, मैं जाके फिर रख दूँ। ऐसे करते करते संगत जी, my husband got posted to Lebanon. He was commanding a unit and his unit went to Lebanon. He was fond of his drink and even he went to Lebanon. उसके बाद कुछ महीनों के बाद मुझे एक दिन एक मैसेज आता है that he's very unwell and I am supposed to go to Lebanon. So I was really shaken. I was very, very attached to him. He the least attached to me. He was like, cool. But my whole life revolved around him. So I was very heartbroken. And मैं वहाँ से दिल्ली आई और मैंने सोचा मैं गुरुजी को मिले बिना नहीं जाऊंगी। मेरे को अच्छे से याद है उस दिन महाशिवरात्रि थी और मैं शिवजी के बड़े सालों से, बचपन से ही मैं शिवजी के व्रत रखती होती थी। आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली, पर मुझे नहीं पता मैं क्यों शिवजी के व्रत रखती होती थी। तो उस दिन शिवरात्रि थी और मैं शिवरात्रि को व्रत रखती होती थी। जब मैं वहाँ पहुंची जहाँ बेस था इनका और वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं मैम ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, आप पहले खाना खा लो, देन वी विल टेक यू टू गुरुजी एंड देन पुट यू ऑन द फ्लाइट। माय फ्लाइट वाज लेट एट नाइट, अर्ली मॉर्निंग। मैं बड़ी तंग आ गई, मैंने कहा ये तो मेरी जान नहीं छोड़ रहे हैं, चलो मैं खाना खा लेती हूँ। तो उन्होंने मेरे को प्लेट में डाल के दे दिया और मैंने जैसे ही फर्स्ट बाइट ली तो मुझे आई रियलाइज कि उसमें तो मीट है। तो मैंने प्लेट नीचे रख दी, मैंने कहा भाई आज तो मेरा व्रत है और तुम लोगों ने मेरा व्रत तोड़ दिया, तो बहुत गलत किया ना। एक आप वैसे डरे हुए हो, एक आपसे कुछ ऐसे गलती हो जाए तो अगेन हमको कुछ समझ तो होती नहीं है, हम सोचते हैं कि हमने गलती कर दी है तो वी विल गेट पनिश्ड फॉर इट, विच इज नॉट हाउ गॉड ऑपरेट्स। God is not here to punish us. So anyway, मुझे बड़ा डर लगा, मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, वैसे ही I am under so much stress and there's so much difficulty in my life और ऊपर से ये गलत चीजें होती जा रही हैं। Anyway, मैंने इनको बोला आप मुझे गुरुजी के पास ले जाओ। सत्संग जी, मैं गुरुजी के पास छोटे मंदिर पता नहीं कितनी बारी गई हूँ। उस दिन मुझे गुरुजी का मंदिर मिला ही नहीं, मुझे एम्पायर स्टेट मिली नहीं। वी वर गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स एंड आई कुड नॉट फाइंड गुरुजी's मंदिर। Finally, when we reached Empire State, गुरुजी अपने कमरे में चले गए थे और सारी संगत चली गई थी। एंड मैंने जाके दरवाजा खटखटाया तो सुदामा बाहर आई।
Sudama used to look after Guruji. तो सुदामा ने जैसे बाहर आए तो मैंने कहा सुदामा मेरे को गुरुजी से मिलना है. तो ही सेड कि गुरुजी तो अपने भक्ति में चले गए बहन जी. मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, आप गुरुजी से मुझे मिलवा दो. ही सेड अब गुरुजी तो बहन जी सब जगह है, आप यहीं से गुरुजी के लिए प्रेयर करो और गुरुजी आपकी सुनेंगे. So again, Satsangaji, I would like to bring this to your notice, that look at Sudama's belief and faith in Guruji, and look at mine. I thought that Guruji is a physical form. He believed that Guruji is omnipresent. So, you know, he was spiritually elevated. I was in the dumps. So I prayed to Guruji and मैंने वहीं बाहर माथा टेका और मैं चली गई. When I went to Lebanon, my husband, the first thing he says to me, he's in the hospital, and the first thing he says to me is, why have you come? It was an embarrassment for him because he was not well. He had suffered liver cirrhosis. Anyway, I had a meeting with the doctor. The doctor wanted to meet me. I met him and the doctor told me he will not survive. He will only live for a maximum of 3 months. This was 2000. And I was so shaken. And then he tells me, he says, the only answer is a liver transplant. And in 2000, liver transplants were not easy. Even in the US, there was a long waiting list, and it was extremely, extremely expensive. My sister-in-law is a doctor. She was in US. My sister was in UK. And I did not know what to do. I really howled that day. And then I said, no, I'm not going to let him go like this. So I used to sit and pray by his side. I pray all the time. Then from there, my sister found out that there's a very, very good doctor in Israel. And she sent me his address. And I went from Lebanon to Israel, across the border, to meet him. I met him and he said that you come back on Wednesday. I think it was Thursday when he said, come back on Wednesday because they have a long, holiday for 3 days. They have a weekend for 3 days or something like that. And he told me to come back on Wednesday. I came back with little hope in my heart and I spoke to my husband and my husband got very angry with me. He said, "Tum kahan dhakke khati firti ho? There's no need for you to go anywhere." He was actually very embarrassed. He had, it was a big setback for him. So he did not want me to, he didn't care whether he lived or not, but I don't know why. He just didn't want me to take him anywhere. So from Lebanon, he told me, he says, I'm not going back to India, let's go to UK. So we both flew to UK. And I was very happy because my sister had arranged for him to meet a doctor in UK, who was again world-renowned. And we went to UK. And I do not know if you know, but जिनको liver cirrhosis होता है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है. They become extremely, extremely angry people. So to the extent that when I would tell him that you're supposed to eat only this, he would throw the plate away, and he would, if I was sitting on his bed, he would kick me and ask me to get off the bed and leave him alone. He was very, very angry. So my sister spoke to him, and to the extent that my sister once told me, she says, why are you taking so much nonsense from him? But I understood that, he's not okay.
So my sister and I persuaded him, and he listened to my sister and he said, okay, I'll go with you to the doctor. So we arranged and we went and we met the doctor, and the doctor said, okay, I will look into him, but he will have to come and get admitted in the hospital. And I will have to do all his tests, and then we'll see where it goes from here. So we paid that initial payment there. The moment we walked out, he was supposed to get admitted on a Monday. The moment we walked out, he says, I'm not going back. And you guys are trying to push me into doing things which I don't want to do. There is nothing wrong with me. I'm not going back. And Sangaji, he couldn't even walk straight. He had become so weak that, and he had jaundice and he was very, very badly off. But his will was so strong and he was so adamant. वहाँ से हमने इंडिया आना था, मेरी प्राइवेट फ्लाइट थी, इनकी ऑफिशियल फ्लाइट थी, so he was to come a day earlier and I was to come the next day. So I rang up my mother, and my mother, in the meantime, while we were there, my mother was going to Guruji and telling Guruji कि Guruji मेर कर दो, Guruji मेर कर दो, and Guruji would keep saying नास्तिक है मैं दिल्ली की तरह. Anyways, so the day he reached India, that evening, my mother insisted and she took him to Guruji. Now, this is what my mother tells me. She says, वहाँ पे बैठ के जितनी देर ये लड़का बैठा रहा है वहाँ पे गालियां निकालता रहा है कि गंजे से ये क्या कर लेंगे जब डॉक्टर्स नहीं कर पाए. You have brought me here, मैं इतना थका हुआ हूँ ममा, I am so unwell, और आपने मुझे यहाँ लाके बिठा दिया है. And my mother says, मैं बोलती रही चुप कर जा लाल जी चुप कर जा, but he wouldn't keep quiet. उधर लंगर सर्व हुआ, he wouldn't eat लंगर. बड़ी मुश्किल से my mother says थोड़ा बहुत लंगर खिलाया और मैं वापस ले आई. Next day I went to Guruji in the evening, और मैं बैठ के और मैंने गुरुजी के साइड में बैठी हुई थी. I was sitting to his left. And I had tears in my eyes, and my mother kept coaxing me कि तू बात कर गुरुजी से. संगत जी, मुझे पता नहीं क्यों हर एक का अपना रिश्ता होता है गुरुजी के साथ, और कई लोग ऐसे थे, वो आते थे गुरुजी जैसे फ्रेंड होते हैं, ऐसे उनके साथ बातें करते थे गुरुजी के हाथ पे हाथ रख के, and I would love that, but I could never do it. I somehow always felt a sense of reverence and maybe a little bit of fear in my heart that I should not do anything which will offend him. So I just kept sitting, and my mother said, go, talk to him, talk to him. And then Guruji looked at me, and I went forward, and all the words that came out of my mouth were, Guruji, theek kar do. And Guruji shouted at me, and he said, नास्तिक है, की कर सकता है मैं दिल्ली कुछ नहीं कर सकता. मैंने ये सुनते ही ना, I came back and I sat down on my seat. I mean, I hardly had to take 2 steps to reach him. I took those 2 steps back and I sat against the wall and I started weeping. Guruji looked at me after a while and he said, "Idhar aa." Guruji का मन इतना ज़्यादा, इतना प्यार था ना उनके अंदर कि वो किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, चाहे कोई भी हो, कितना उसके कर्म अच्छे बुरे जो मर्जी. He never differentiated. Whatever your problems, if you went to him, he would make sure that he took them on. He told me, ऐ कर दे. He told me certain things to do, and I said, "Acha ji," and I went and I did it. Now, Sangatji, my husband's SGOT, SGPT, these are protein levels. When they're supposed to be in the range of 0 to 30, some 30 odd, not more than that. My husband's used to be 300 and something. That is that when your cells are breaking, these proteins are released. So that is his condition. Now,
they started to come down. They came down to 100 something and all that. So I told my husband, I said, see, Guruji, ki aap pe mehr ho gayi. He said, oh, nonsense, you know, this, what are you trying to tell me? I mean, that is, I'm telling you because this is what his thought was. He never believed. He was not a believer. Even when we went to the Gurdwara, if I told him I want to go to the Gurdwara, he would say, "Theek hai, tu ja, main bahar khada hu," you know. But otherwise, a very good human being. But he did not believe in any kind of, you know, rituals or anything like that. So, ऐसे करते करते मैं गुरुजी के पास हर रोज जाने लगी. Every single day I used to be with Guruji. And the first thing which happened, Sangatji, is my agitation started to go away. My fear dropped. I became shant inside. I started to become a better human being. मेरे को किसी के लिए मेरे मन में कभी बुराई नहीं आती थी, कभी मैं बुरा नहीं सोच पाती थी किसी के लिए. और ये मेरा कुछ नहीं था, ये गुरुजी की मेहर हो रही थी. मेरा अंदर साफ कर रहे थे गुरुजी, जो कि पता नहीं कितनी गंदगी थी उसमें, पर वो उनकी प्रेजेंस में साफ हो रहा था. ऐसे एक दिन मैं गुरुजी के पास से गई और गुरुजी मेरे साथ, गुरुजी के बड़ा ही सिंपल सा वो था कि गुरुजी मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे, मैं गुरुजी से ज्यादा बात नहीं कर पाती थी. सो ऐसे गुरुजी के पास से मैं एक दिन वापस गई. अब हम दिल्ली में, इनकी जो रेयर पार्टी थी या जो ऑफिसर्स पीछे थे वो टेंट्स में थे. तो we also had a tent and I was sleeping there, my husband by my side. And मेरे को नहीं पता कितने बजे रात को ऐसे लगा जैसे टेंट का फ्लैप हटा है, जोर से स्विश करके आवाज आई और एक अंदर हवा सी आई और वो हवा मुझे सुनी और मैं सोते सोते उठ के मैं बैठ गई और मेरे को डर सा लगना शुरू हो गया और मैंने सुखमनी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया. बिकॉज मैं इतना करने लग गई थी तो मेरे अंदर वो चलता रहता था. सो आई मीन इट्स नॉट लाइक आई हैड टू डू इट, इट वाज हैपनिंग. एंड मैंने मैं चुप से बैठ के करती रही प्रेयर. और संगत जी, मेरे फोरहेड में, राइट वेयर दे से यू हैव द थर्ड आई, देयर इनसाइड मी समथिंग ओपन्ड लाइक एन अपर्चर. जैसे पुराने कैमरास का अपर्चर खुलता है, ऐसे खुला और वहां पे गुरुजी लाल चोले में बैठे हुए हैं और मुझे क्लियरली दिख रहे हैं अपने अंदर और मुझे बोलते हैं, उठ जा, हम सुत्ती पई है, मैं उन्हें ठीक करना है. और मैं प्रेयर करती थी. मैंने कहा पता नहीं, आई एम hallucinating or what's happening to me. I mean, I didn't even have that thought. I was so scared. But I was, actually quite taken aback कि हो क्या रहा है मेरे साथ. Anyways, मेरे को थोड़ी देर के बाद ऐसी स्मेल्स आनी शुरू हो गई जैसे ऑपरेशन थिएटर में आती है. और कुछ देर के बाद वो अपर्चर बंद हो गया और एक हवा सी बाहर चली गई. एंड मैं थोड़ी देर के बाद प्रेयर करती करती मैं सो गई. मैं जब सुबह उठी, आई टुक अ बाथ एंड देन द होल थिंग केम बैक टू मी कि मेरे साथ तो ऐसे हुआ है रात को, बट संगत जी, आई वाज सो स्टूपिड, सो फूलिश कि मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आया. मैं गुरुजी के पास जाती हूँ और गुरुजी मेरे को, जैसे मैं माथा टेकती हूँ, गुरुजी मेरे कहते हैं, फिर करता ना कल्याण. And Sangaji, that's when I realized, I said, oh my God, he's come and blessed him. And now he's going to be all right. And Sangaji, I saw that Guruji's nails were blue. The nails of his hands were blue. I felt so horrible and so bad that I had troubled my Guru. I had brought upon him all my problems. And he has taken it upon himself. I stood there and I said, I will never, never trouble you again. And I'm sorry for what I did. My selfishness has brought this upon you.
After that, Sangatji, I used to keep going to Guruji. My husband started to drink again. The doctor had said, even if he drinks one drop, he will not survive. And I remember that not only did this doctor tell me, every single doctor we met told me this. The one in India, I remember with a yellow felt pen underlined, one drop of alcohol and he will not live. But Sangatji, he had barrel upon barrel of alcohol after that. And nothing happened to him. I used to go to Guruji, and my dialogues with Guruji would be in my heart. I would always say, I would never say it aloud. I would stand there and I would say, Guruji, my husband's name was Lalji, कि Lalji को मेरा मीत बना दो. And Guruji अपना मुंह खोल के मुझे बोलते होते थे कि मान मिथनी. His surname was Man. कि मान मिथनी. And I used to feel so bad. And then the next thing he would say is, की हाल है मानदा? And I would say, ठीक है Guruji. And he would say, पी रहा? I would say, हाँ जी. And he would say, पीन दे. Guruji के साथ ना संगत जी मेरा ये standard dialogue था, standard. I could not utter anything more than what he asked me. And this is what he always asked me. Time went on. Slowly my husband also started to somehow feel that maybe Guruji is there or whatever, because he got posted to Jalandhar for a temporary duty, and one day he went to the Jalandhar Mandir, and this is what he tells me, my husband, that he was sozzled, and he went and sat outside the Mandir, and Guruji came and blessed him. And then one day we came to Empire State, both of us, and this was early in the evening before the satsang used to start. Guruji अपनी walk करके आए थे, और वहाँ पे ना छोटे मंदिर में एम्पायर स्टेट में अगर आपने फोटो में भी देखी है तो जो किचन की वॉल थी और गुरुजी के रूम के राइट साइड में, डोर के राइट साइड में एक साइड बोर्ड पड़ा होता था, नाइस हाई साइड बोर्ड, एंड गुरुजी वाज सिटिंग ऑन दैट साइड बोर्ड. तो हम दोनों ने माथा टेका. जैसे ही मेरे हस्बैंड मेरे आगे थे, उन्होंने माथा टेका, गुरुजी ने अपना हाथ ऐसे हवा में किया और प्रसाद लाके और मेरे हस्बैंड के हाथ में डाल दिया. मेरे हस्बैंड ने खड़ाक से अपने मुंह में डाला और खा लिया. एंड मेरे को दिल में आया, मैंने कहा देखो, he didn't even share it with me, he's eaten it himself. So Guruji did not see whether you believed him, you didn't believe him. He was like the rain, which would fall equally on every person, good, bad, believer, non-believer, spiritual, non-spiritual. He just was there, and in his presence, whether you liked it or not, you were blessed. ऐसे ही संगत जी टाइम निकलता गया और मैं अपने I was working in a school, I was heading a school, and I used to I realized that women generally are very emotional, and they would be disturbed with little things happening at home, and I would wonder to myself that look, because I had gone through quite a bit by then. So I used to feel for them, and I would feel that, oh God, I wish I could somehow make them understand that having an argument is not the end of the world. And it's really nothing, because it's all emotional, and it's just high and low emotions which lead us to feel upset. But so I started to talk to them, and I didn't know how to approach this. So I had read a lot of books, and मैंने उनको एक course सा जिसमें मैंने छोटे-छोटे little ways of cleansing yourself kiya. So we would sit down together, about 15-20 of us, and after school or before school, and we would do this. And then during the
holidays. We did this whole course thing, and my aim was basically to bring them to Guruji, not knowing that that is what I was doing. Now, why I did this again is all Guruji wanted me to do it, or he made me do it, because I am not capable of any of this. So ultimately, मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया, और संगत जी जिस दिन मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया, मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई उधर स्कूल में। और फिर बात करती रही मैं उनसे, तो कुछ दिनों बाद फिर ऐसी बात होती रही। तो सम ऑफ देम टोल्ड मी कि मैम अगली बार आप जाओगे ना, हमें भी लेके जाना। मैं अंबाला से भी टैक्सी लेके एंड आई वुड गो टू गुरुजी ऑफ एंड ऑन. So once we decided, and we took 2 vans, and we all of us went to Guruji, went to Delhi. When I reached there, there was this girl with me whose husband was really mean to her. He was the whole family, as a matter of fact, and her troubles had reached an extent where sometimes the police had to be called in, because he would beat her, he was womanizing, all that was happening in her life. So I just told her, I said, why are you taking all this? Why don't you, go away to your parents? Her parents were somewhere far away in Gujarat. So she couldn't find the strength to do that. You know how we all are weak inside, and we find it very difficult to face our situations or break away from them. So anyway, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसे है, गुरुजी से जो भी कोई कुछ मांगता है ना, वो गुरुजी उसका पूरा करते। तू विमी जरूर गुरुजी से जाके अपनी प्रॉब्लम बताना, गुरुजी विल लुक इनटू इट, है ना, गुरुजी तेरा जरूर साथ देंगे। सो ये सबने सुन लिया। एनीवेज हम गए, जैसे ही हम पहुंचे तो आई वाज राइट इन फ्रंट, वो ये सब पीछे थे। जैसे मैंने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी कहते हैं, अच्छा फिर ट्रक भर के ले आई? And I was like, Hanji Guruji. Then Vimi ne matha teka. Vimi was a believer of Sai Baba. जैसे इसने माथा टेका, मैंने सोचा गुरुजी से बात करेगी, इसने तो बात ही नहीं करी है। तो साइड में बैठ के इसने आंखें बंद कर ली और बैठी। दूसरे सब ने बातें करी, ले जितनी भी मेरे साथ गई थी, किसी ने बोला ये वो, जो भी कुछ किसी ने बोला गुरुजी से, गुरुजी ने उनसे बात करी। और मेरे को इतनी वो हो रही थी कि ये क्यों नहीं लड़की ने बात करी गुरुजी से, ये क्यों चुपचाप बैठ गई है। जब लंगर हुआ और हम बाहर आए हाथ धोने, तो मैंने कहा, विमी तूने क्यों नहीं बात करी? शी सेड, मैम मुझे तो वहाँ गुरुजी दिखे ही नहीं, मुझे तो साईं बाबा दिख रहे थे, तो मैं किससे बात करती, मुझे तो साईं बाबा दिख रहे थे। एनीवेज जब उसने गुरुजी को माथा टेका था, तो गुरुजी ने उसको ये बोला था, मंग की मंगनी, और इस लड़की ने सिर हिला के और आंखें बंद कर ली थी। संगत जी हम वहां से वापस आ गए गुरुजी के पास से, और मैंने आते ही मैंने इसको बोला, मैंने कहा तेरे को मांगना चाहिए था, but she just kept quiet and she had tears in her eyes. Few days later, she found the strength to leave Ambala and go off to her parents' place. And she was very happy. Her mother rang her up and she said, I want you to leave right away and come to me. All those people who had gone with me, one of them asked for financial independence. She's doing very well today. She has her own online classes, and she has her classes, and she has her own academy. Somebody asked for her husband's promotion. All that, whatever anybody asked for was fulfilled. So संगत जी, बड़ी बड़ी मेहरें हुई गुरुजी की, पर मैं इतनी मूर्ख थी, मुझे पता ही नहीं था। और मुझे लगता था कि गुरुजी तो नाम नहीं देते आपको, like some kind of a mantra which you're supposed to do. See how stupid one is. कि वो होगा, मेरे अंदर इतनी चेंजेस आ गई, पर मुझे वो मंत्रा चाहिए था जो मुझे परमात्मा से मिला देगा। मतलब ये था मेरा level of thinking and of whatever you may say, stupidity. So I used to, being with Guruji, I would go
do Isha yoga, do transcendental meditation, do all sorts of stuff and come back. Guruji सबको बोलते थे कि तुसी धक्के खांदे फिरते हो. मेरे को गुरुजी ने कभी नहीं बोला. And गुरुजी मुझे बोलते थे तू चौपाई दा पाठ करया कर. That's the only thing he ever told me. चौपाई दा पाठ कर. And I would think in my heart कि नहीं, मेरे को तो सुखमनी साहब का पाठ इतना अच्छा लगता है. मैं करती थी चौपाई साहब का पाठ और फिर छोड़ देती थी. और फिर मैं सुखमनी साहब का पाठ. Now चौपाई साहब का पाठ आपको पता है is not more than I think 7-8 minutes, max 10 minutes. And Sukhmani Saab ka part is anywhere between 50 to 1 hour, 10 minutes, depending on how you do it. But I was happy doing Sukhmani Saab and I would not do Chaupai Saab. So this is what I was. I'm just trying to tell you how foolish we are and how I did not even understand what Guruji was. And this was not only my case, this was the case with most of us, because Guruji अपने ऊपर पता नहीं क्या हमारी आंखों पे पर्दा डाल देते थे कि हमें पता ही नहीं लगता था. अगर कोई बोलता था कि गुरुजी इसको ठीक कर दो, तो गुरुजी का आगे से जवाब होता था मैं कोई डॉक्टर है. संगत जी, मैं वहां पे जब मत्था टेकती थी, मैं देखती थी कि कई लोग गुरुजी को ना पूरा नमस्कार करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे. और मैं सोचती थी क्या ड्रामा सा करी जा रहे हैं, है ना? Is this the way to do it? Why are they trying to show the world that they care more about Guruji? Then Guruji would tell some people कि तुसी खड़े होके ते अपना एक्सपीरियंस सुनाओ. And I would feel क्या गुरुजी क्यों बोल रहे हैं? Guruji such a elevated person. Why is he asking them to? पता नहीं what is his aim behind the whole thing, you know? And somewhere this would also come. Is he wanting his own, बड़ाई? But फिर मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ऐसे नहीं कर सकते. पता नहीं गुरुजी का क्या पीछे वो है इसके. What is his the reason behind it? But I didn't want to get up and ever do. I mean, I would always feel कि गुरुजी कहीं मुझे ना बोल दे, है ना? मतलब ऐसे मेरे दिमाग था. फिर गुरुजी पाँव दबाते होते थे और मुझे लगता था हाय मेरे को गुरुजी ने बोल दिया ना पाँव दबाने को, तो यहाँ पे इतने लोग देख रहे हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आएगा. पंजाब के जितने भी कोई जान पहचान के रिलेटिव्स हैं, तो मतलब इतनी छोटी सोच थी मेरी. और उसके बाद संगत जी एक टाइम आया कि आई यूज्ड टू प्रे टू गुरुजी एंड से गुरुजी प्लीज मैनू भी मौका दे दियो कि मैं तुहाडे चरण दबा सकां. ऑफ कोर्स ही ऑलवेज लिसन टू यू, सो मेरे को दिए मौका. और संगत जी एक टाइम आया मैं गुरुजी को दंडवत प्रणाम करती थी. एक टाइम आया कि मैं गुरुजी के आगे प्रेयर करती थी कि मेरे को भी सत्संग करना है आपका. और गुरुजी मुझे बोलते थे चल खड़ी हो जा, शॉर्ट सुनाई. एंड आई वुड डू इट. कभी कभी किसी को बोलते थे कि एनु सुना ऐसे करके. आई रिमेम्बर वंस ही टोल्ड मी शौरी अंकल को कि उनको सुना, गरेवाल अंकल, ऐसे किसी को बोल देते थे कि सुना इन्होंने. We were so naive, didn't even know that we were with God and that we were so blessed. संगत जी मेरे साथ श्वेता आंटी, can I continue? Should I continue, Shweta aunty? So, Sangatji, there are 3 incidents which I would like to tell you, which happened when I was in Guruji's presence. So they were they left an impact on me. So I would like to share them with you. एक बार ऐसे गुरुजी के पास कोई एक लेडी आई. She must be about 60-65 years old.
and she came to Guruji, and उस टाइम पे मेरा ख्याल लंगर नहीं लंगर I don't recall, but yes, I mean, there were not many people sitting there at that moment when she came. So she came and she started to talk to Guruji, and उतनी देर में संगत भी वापस अंदर आनी शुरू हो गई. हाँ, लंगर खत्म हो चुका था. So they had gone out to wash their hands, and everybody started to come back in. तो उस लेडी ने कुछ बोला गुरुजी को, और एक पैकेट सा गुरुजी के पाँव पे रखा. तो गुरुजी को कुछ जब उन्होंने कुछ बोला, तो गुरुजी को इतना गुस्सा आया कि गुरुजी ने पाँव से उस पैकेट को किक किया और बोला कि तू मैंने पैसे देना आई है. और संगत जी वहां पे जितने गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे, और पता नहीं कहाँ से, फ्रॉम द रूफ ऑफ वेयर आई डोंट नो, हमारे ऊपर वर्षा होनी शुरू हो गई अमृत की. मतलब ऐसे छींटे पड़ रहे थे जैसे शादियों में नहीं वो लोग इत्र फेंकते ऐसे करके, और सारी स्वरूप में से अमृत गिरना शुरू हो गया. तो संगत भाग भाग के और अमृत लेना शुरू कर दिया. अब सम ऑफ देम वर स्टैंडिंग, सम वर सिटिंग, सो सब वो अमृत की तरफ भागे. और मैंने रियलाइज किया कि सारे स्वरूप के पास चले गई और मैं अकेली बैठी रह गई. और मैंने गुरुजी को जाके माथा टेका. मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा आ तो यहीं से रहा है ना. सो मैंने माथा टेका और फिर मैंने भी टेस्ट किया. एंड संगत जी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन the taste of the amrit. It was mildly sweet, fragrant, and so amazingly different. The taste was so different that I had never tasted something like that. This was my first experience. The second experience I'd like to tell you is कि एक बार गुरुजी के पास जब किसी का कुछ अच्छा होता था, किसी की वेडिंग होती थी या कुछ भी होता था, तो वो मिठाई ले आते थे गुरुजी के पास. तो ऐसे ही कोई छेना मुर्गी के 2 डब्बे लाया, और उस दिन संगत काफी थी, तब काफी संगत बैठी हुई थी. सो देयर वर अबाउट मे बी 120 पीपल दैट डे. तो गुरुजी ने बांटना शुरू किया. अब गुरुजी की आदत थी कि गुरुजी के छोटे छोटे इतने सुंदर हाथ थे, और गुरुजी एक हाथ से अगर आपको कुछ देते थे ना प्रसाद, तो आपके दोनों हाथों में पूरा नहीं आता था. मतलब गिरने वाला होता था, आपको अपना मुंह हाथ पे लाके और खाना पड़ता था कम करने के लिए उसको. Which was again something we never understood how it happened. तो उस दिन गुरुजी भर भर के सबको वो छेना मुर्गी के डब्बे में से निकाल के देना शुरू कर दिया. And I was sitting there and I was thinking, yeah, this is not going any far. You know, not everybody is going to get it. गुरुजी क्या करें, डब्बे का ढक्कन लगाएं, उसको डब्बे को हिलाएं और डब्बा फिर भर जाए. तो ऐसे ही there was a lady standing next to Guruji. I think it was Roma Aunty. She looked like that. She peeped inside कि गुरुजी कर क्या रहे हैं. And he said की देखती है, पराम हो जा. And I also noticed that. मैं कहा ये तो क्या कमाल हो रहा है कि गुरुजी भर ले रहे अपना डब्बा और फिर से संगत को देना शुरू कर रहे. So गुरुजी के तो कुछ हम बोल ही नहीं सकते. गुरुजी just God incarnate, and we were foolish people around him who didn't even recognize him. ऐसे ही संगत जी, एक बार मैं गुरुजी के जिस सिंहासन के पीछे खड़ी हुई थी, एंड यू विल नॉट बिलीव इट, मुझे इतनी ज्यादा वाइब्रेशन फील होनी शुरू हो गई ना, मुझे ऐसे जैसे पूरी धरती हिल रही है, एंड आई एम आल्सो शेकिंग विद इट. गुरुजी looked at me and he said, आगे आ जा, उत्थे खड़ी ना हो. He knew that I could not take his vibration. I was not capable of the amount of blessings he was capable of giving. I was not capable of taking it. I was not clean enough to absorb it. So this was another experience which really shook me. Life went on. Sangaji, there is so much to tell, that and Guruji की इतनी मेहर इतने लोगों पे, और हम इतने अनजान ना समझ जो गुरुजी को पहचान ही नहीं पाए.
I don't know whether any one of you can hear me, because I tried to speak to Shweta, but I did not get a reply from her. So, I would like to close here. Some other time I will take it forward. So he said, no, I am going alone, and your aunt is not going, and I will be staying in the mess. So somehow I had this feeling that he doesn't want me to accompany him. So I then somehow just didn't want to drop it. So I took a taxi on my own and I went. That day, Sangat ji, when I went, मुझे पता नहीं क्यों जाते ही अंदर इतना रोना आना शुरू हो गया. अब ऐसा टाइम आ गया था कि मुझे रोना बिल्कुल नहीं आता था. मुझे लगता था कि गुरुजी से कुछ भी नहीं होगा मेरी जिंदगी में. And believe me, not everything was okay, in the sense that my husband was drinking all the time. And of course, when he was drinking, he was not being very nice. So, but somehow I just felt that everything is okay. That's fine. Nothing is wrong in my life. And I could take it all. So, अब जब मैं गई तो पता नहीं क्यों मैं वो जहाँ डीजे अंकल बैठते थे पीछे वहां पे बैठ के और मैंने रोना शुरू कर दिया. I kept weeping. मुझे नहीं पता लग रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही थी. और संगत जी, उस दिन मैंने गुरुजी को जब माथा टेका तो अगेन द सेम थिंग कि गुरुजी लाज मेरा मीट बना दो. एंड गुरुजी सेड मान मितनी. सो आई सेड, उस दिन मुझ में पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई और मैंने बोला कि गुरुजी तुसी इस तरह क्यों कह रहे हो. एंड ही सेड, मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये तो गुरु गोबिंद सिंह ने किया है. एंड संगत जी, आप मानोगे नहीं, जैसे एक बच्चा होता है ना, कोमल सा बच्चा, ऐसे गुरुजी जस्ट पुल्ड हिमसेल्फ बैक. And he said कि मैं थोड़ी क्या है, it's not me who's saying it. I mean, and he asked me, की हाल है मांदा? I said, पी रहा है? He said, I said, हाँ जी. They said, पीन दे. उस दिन again मेरे में पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई. And I said, ते गुरुजी मैं. And he said, तू मेरे कोल बैठ जा. And I said, पता नहीं what is गुरुजी saying to me. संगत जी, उस दिन जब लंगर प्रसाद हुआ, सारी संगत को गुरुजी भेज देते थे, कुछ लोगों को रख लेते थे. उस दिन मुझे गुरुजी ने अपने पास रख लिया और बहुत थोड़े लोग थे, मेरे साथ 3-4 लोग थे. And I was sitting and Guruji went inside. Guruji didn't tell me to leave. Guruji went inside, he changed into his t-shirt and pants, and he came and he sat right next to me. And he kept sitting. And I remember his legs were stretched out and he was shaking his feet. And he was in a pensive mood that day. Anyway, थोड़ी देर के बाद, I think चाय पिला के गुरुजी ने मेरे को बोला, हम तो जा. And because he knew that I had to go back to Meerut, and it was after 12 or 1, I don't even know what the time was, but it was late. So I came back to Ambala. I was in Ambala that time. And a few days later, we hear that Guruji has left his chola. Sangaji, we went. The moment we got to know, we went. And आप मानोगे नहीं, वहाँ बड़े मंदिर में I kept sitting and मेरे को बिल्कुल अंदर से कोई दुख नहीं था, कुछ वो नहीं था कि गुरुजी नहीं है. मुझे था नहीं, गुरुजी is here, गुरुजी is not gone anywhere. I don't know why this thought. I am otherwise a very emotional person, but I did not have tears in my eyes that day. I had no feeling. There was so much shanti inside me. I do not know why. And I was like, he can't go, he's here. So, and of course, then we attended the cremation, and of course, we were lucky enough to touch the wood which became his, which was used for him. And it was
But I was not sad. I do not know why I was not sad at all. I remember people used to tell me, Guruji teri badi mande hai, Guruji teri ardas sunde hai, tu sade liye pray karte. And I would tell them कि मैं नहीं कर सकती, मैं गुरुजी कुछ नहीं कह सकती हूँ, मैं बहुत कुछ मांग लिया ना, तो मैं नहीं मांग सकती. I didn't even pray for my children. I did not pray for my mother. I just couldn't bring myself to do it. Yes, I do not know, we are human. अंदर से कब आवाज निकल जाती थी वो मैं नहीं कह सकती, पर deliberately मैंने कोशिश करी कि मैं गुरुजी के आगे अरदास ना कर पाऊं. बस मुझे एक बार याद है कि मेरे को कई बार इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती थी कि आई वुड से कि गुरुजी मेरी बस हो गई आफ्टर ही लेफ्ट. अब मैं नहीं सह सकती, आप मेरे जितने भी कर्म आपने काटने काट दिया, अब मेरे को बस मेरे से और नहीं बेर होता. Many things happened, you know, through which Guruji kind of pulled me out. And there's one more thing I would like to tell you, which of course there's so much which happened with my family and so much blessings happened with them. This is something I'd like to tell you because I want to tell you that Guruji never left us even for a minute. So I once went to Bade Mandir. This is, I think, somewhere in 19, and it was Guru Purnima. And my daughter was with me. And we went, and इतनी भीड़, मुझे याद है गुरुजी बोलते थे तुसी आया करो, तुहानू मेरे दर्शन भी नहीं होने, इन्ने लोकी हो जाने हैं. And we think गुरुजी की कहंदे है, you know, इत्थे किन्ने ज्यादा 100-150 लोकी हुंदे, कित्थे इन्ने ज्यादा लोग हो जाने. सिर्फ जब बड़े मंदिर में you know कोई फंक्शन होता था तो लोग हो जाते थे 1000-2000, ऐसे 3000. बट वो तो इट वाज वंस इन अ वाइल. गुरुजी के पास हम लोग जाते थे, गुरुजी को माथा टेक के बैठ जाते. ज्यादा से ज्यादा 15-20 लोग होते थे लाइन में आपके आगे. सो जब हम गए तो इतनी लंबी लाइन, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया काम, कैसे यहाँ खड़े रहो इतनी देर, है ना. एनीवेज, मतलब देखो हमारी सोच देखो कि जो गुरुजी के पास ऐसे सीधे पहुंच जाते थे, हम अब वेट करने को भी हमारे मतलब इतनी पेशेंस नहीं थी हमारे में. एनीवेज, जब हम खड़े रहे और उन्होंने ऐसे गोल गोल घुमा के आफ्टर एन आवर एंड हाफ वी फाइनली रीच्ड इनसाइड द हॉल. और जब हॉल में पहुंचे तो उन्होंने तो गुरुजी के माथा ही नहीं टेकने दिया. चलो आंटी, चलो आंटी, चलो आंटी, यू नो. एंड मैं गुरुजी की वहां पास से निकली, गुरुजी के चेयर, गुरुजी के सिंहासन के पास से. मैंने कहा कि गुरुजी हुण मैं तुहाडे कोल नहीं आ सकती, ये तो मैनू तुहाडे कोल बैठन भी नहीं दिंदे, है ना. मैं नहीं आ सकती, हुण तुसी मेरे कोल आओगे, मैं नहीं आना इत्थे हुण. और मैंने ऐसे बोला और मैं बाहर निकल गई. संगत जी, जैसे ही मैंने पाँव बाहर रखे, एक सेवादार मेरे पास आए और मुझे कहते आंटी तुसी अंदर बैठना है, चलो. He took me back. He took me and my daughter back. And he made me sit right there in front of Shivji's statue. और मैं वहां बैठी रही और मैंने कहा कि गुरु महाराज मैनू माफ कर दो, मैं बहुत अनजान है, तुसी तो एक गल सुनते हो, साडी सारी इच्छावां पूरियां करते हो, ते असी इन्ने नाशुक्रे हैं कि असी तुहाडे तो मंगी जा रहे हैं. So Sangat ji, Guruji has not gone anywhere. Guruji is there. Guruji is listening to you. Guruji is in every way blessing you. Even when you are not attached to him, you don't feel the connection with him, he's still with you. Thank you so much, Sangat ji. थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया. गुरु महाराज थोड़ा लख लख शुक्राना कि तुसी मैनू अपना जर्नी शेयर करन दित्ती. मेहर करो, हर एक ते मेहर करो, हर एक नू अपने नाल जोड़ के रखो,
ਹੱਥ ਟਾਈਟਲੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ। मेहर करो गुरु महाराज के, मेहर करो। थैंक यू संगत जी, थैंक यू वेरी मच।